Everyone. I hope I am audible and visible. Yes or no? Let me check my newspaper first. Okay, so everything seems to be fine. I don't think I have any issue with the voice or anything. Yes. Yes, I think everything seems to be fine. Okay, hi Daksh, good morning. Hello Rishparna, good morning beta. Okay, so भाई साहब आज है तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल फेज वन इलेक्शन राइट यस सो इतनी लंबी चौड़ी मेहनत के बाद झाल मुड़ी खाने के बाद मछलियां खाने के बाद स्किन टोन चेंज करने के बाद there is a lot of thing that is being done just to win an election right we have this particular day where you can get like almost 60% of the total poll then the next phase will be done on the 29th of April. So technically we are left with 6 days with low price fuel. है ना? And if special trains from Gujarat for voters, yes, they can arrange special train for Gujarat from Gujarat to voters, right? They cannot arrange special trains for those people who want to go back to their hometown, either to celebrate Diwali or to Chhat Puja, or if they are a migrant worker, so they cannot even arrange a special train so that they can reach there properly. So technically, yeah, election के लिए अपन कुछ भी करेगा. Yeah, that is what it is going on. Technically, it's a violation of model code of conduct. You cannot do this. You cannot specially arrange the train for the voters. It's the voters' duty to arrange themselves traveling by themselves, right? But ठीक है, अभी सब कुछ चल रहा है तो ये भी चलने दो. हाँ हाँ तो खैर ठीक है. So let's start with what we are having. सबसे पहले तो 2006 मालेगांव ब्लास्ट जो था, राइट, उसके चार अक्यूज जो हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, राइट. यस, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मालेगांव ब्लास्ट के बारे में बिकॉज देयर आर टू मालेगांव ब्लास्ट. one is 2006, another one is 2008, right. 2008 made more headlines than 2006, but both of them were deadly. I guess 2006 Maligaon blast there were 31 people who died, right, officially, and unofficially the people says 37 people died. So it has more casualties than 2008 Malegaon blast, right. That was the same blast which in which former MP from Bharatiya Janata Party Sadi Pragya was accused of. So Malegaon blast को हम डिस्कस करेंगे. ऑल फोर अक्यूज जो थे वो सब के सब क्या हो गए, डिस्चार्ज हो गए हैं. Is there no process to keep EC accountable? uh, Daksh, there is a term known as loophole, right? And people actually exploit loophole when it comes to constitution for their benefit. And this is what they did when they put the appointment bill for chief election commissioner and election commissioners in the parliament, right? So yeah, technically no. Chalo, let's move to the next one. After the Malegaon blast, right? The entire discussion is on SIR of West Bengal and Momata Didi versus ED. Right? Yes, there is a court says कि भैया ये कोई state versus center versus state का कहानी नहीं है. It's a regular particular क्या कहना चाहिए debate. तो वो particular चल रहा है और अभी चलता ही रहेगा वो. एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसने ई स्पोर्ट्स पे एक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन रखा हुआ है फॉर गेमिंग फर्म स्टार्टिंग फ्रॉम 1 May. Yes, under the promotion of regulation of Online Act 2025. So if you are playing online games, तो registration करवाना पड़ेगा. फिर Election Commission is in action. Like approximate 1,000 crores have been seized from Tamil Nadu and West Bengal by the Election Commission during the election. Right? Yes. और election के टाइम पे ऐसा होता है. So ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नई चीज है. Then comes the US Iran. Right? That is still going on. I had one of the tweet, read one of the tweet yesterday evening.
where the people says the war is technically over. There is a new kind of naval warfare in which people just want to block the ships and fight on it. Right? तो ईरान यूएस वॉर फॉर नाउ लुक्स लाइक कि हॉल्ट पे है, बट प्रॉब्लम कैन बी एनी पर्टिकुलर टाइम, कभी भी हो सकता है. चाचा ट्रम्प हैज नो प्रॉपर व्हाट वी कैन से साउंड माइंड, तो ही कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम. राइट? नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से एक पर्टिकुलर न्यूज आई, इट्स अ गुड न्यूज एक्चुअली. मतलब टेक्निकली इट्स अ न्यूज, बट good or bad, तुम वो करो. The home minister, right? One of the DJ who become the home minister in Nepal, क्या नाम था उनका मिनिस्टर का? Sudhan Gurung, right? He resigned within a month of taking office due to financial scrutiny and alleged ties with the money laundering case. Yes, उनका नाम एक money laundering case में आया and he resigned. Right? There was no pressure from the prime minister or something. He resigned by himself on the moral grounds. There was a time in India when some leaders used to resign on the moral ground क्योंकि morals थे, अब नहीं है, so ground भी नहीं है. ठीक है? These are the most important news for today, right? Let's have a discussion on two most important thing कि क्या है क्या नहीं है. So सबसे पहले हम मालेगांव ब्लास्ट की बात करते हैं. किसकी बात करेंगे हम? मालेगांव ब्लास्ट. Why this particular case is important? है ना? पहला टॉपिक, पहला डिस्कशन तो इसमें होना चाहिए कि why this particular case is important. This is one of the मतलब क्या कहना चाहिए, unique kind of case. Malegaon is the same place where two blasts happened, one in 2008, one in 2006. Both were associated with so-called Hindu extremism, right? Where or right-wing extremism, where people want to create some particular issues between the communities, right? And they wanted to have some destabilization, lesser amount of peace between those people. So ये थोड़ा सा critical part में रहा है. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या चीज स्टार्ट हुई है. सो बॉम्बे हाई कोर्ट जो है ना, मैं तुम्हें थोड़ा सा जो नोट्स बनाया उस पर बात कर लेता हूँ. हैज डिस्चार्ज ऑल द रिमेनिंग फोर अक्यूज इन द 2006 मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट केस. Right, the division bench comprised of Chief Justice Sri Chandrasekhar and Justice Shyam Chandak, right, quashed the charges of murder, criminal conspiracy, anti-terror law, that is UAPA, that has been framed. Yes, ये particular word लिखा है कि ये जो है ये framed charges थे by NIA, स्पेशल एनआईए को. तो उन्होंने सबको क्या कर दिया? डिस्चार्ज कर दिया. थोड़ा सा डिटेल की बात करें, जो अक्यूज्ड हैं मैं उनके नाम बोल देता हूँ. राजेंद्र चौधरी, धन सिंह, मनोहर राम सिंह नरवारिया और लोकेश शर्मा. दीज वर द फोर मेन अक्यूज जिन्हें 2006 के मालेगांव ब्लास्ट केस में किया गया था, और वो सब के सब क्या हो गए? डिस्चार्ज हो गए. कोर्ट की रीजनिंग जो थी वो सीधे तौर पे कहती है कि court found a prima facie case to interfere with the lower court's decision. Nothing that the prosecution NIA failed to produce substantive evidence linking to the men to the blast. Right? Yes. So उन्होंने बोल दिया कि कोई भी ऐसे सब्सटैंसिव एविडेंस नहीं मिले हैं जिससे इन लोगों को आप ब्लास्ट से क्या कर सकते हो? लिंक कर सकते हो. ये कोई आसान इन्वेस्टिगेशन नहीं थी. जब तुम इसके हिस्ट्री में जाओ, राइट, है ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि इसने क्या, इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं. सो एट फर्स्ट एटीएस वाज इन्वॉल्व, देन सीबीआई वाज इन्वॉल्व, राइट, देन एनआईए वाज इन्वॉल्व, एंड तब जाके इस केस को आगे बढ़ाया गया. सो थोड़ा सा चीजें बता देते हैं. महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड was originally the one which was associated with the investigation. They arrested, है ना, 9 Muslim men. देखते जाओ तुम ध्यान से. They arrested 9 Muslim men, right? Allegedly, they were the members of a banned group, SIMI. Right? The full form of SIMI is Student Islamic Movement of India. सफदर नागरी करके एक इंडिविजुअल था जो इसको लीड करता था. इट्स अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में एक इस्लामिक मूवमेंट लाना चाहता था. बाद में ही वाज अरेस्टेड एंड लेटर वाज एनकाउंटर में ही डाइड. राइट. फिर उसके बाद 2011 का टाइम आया. मतलब
2009 में सीबीआई थी, 2011 में एनआईए ने टेक ओवर किया इस पर्टिकुलर केस को। एंड आफ्टर टेकिंग ओवर द प्रोब, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी claimed that the blasts were actually work of a right-wing extremism following a later confession by Swami Asimanand. तो स्वामी असीमानंद का नाम आया था, and they said कि he actually confessed that it's a work of a right-wing extremism, right? But the court, High Court, Bombay High Court, they said कि ऐसा कुछ भी आप स्टैब्लिश करने में, लिंक स्टैब्लिश करने में फेल रहे हो। अब 2016 में इसका एक पर्टिकुलर हुआ है, द स्पेशल कोर्ट डिस्चार्ज्ड ऑल 9 Muslim men, right? After the NIA found no evidence against them. All 9 Muslim men were actually डिस्चार्ज, क्योंकि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला था। और उसके बाद जो कहानी है उस पे आता है। आई मीन थिंक अबाउट इट, हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत कुछ क्रिटिकल डिस्कस करेंगे, हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। देन 2013 में कुछ नए अरेस्ट हुए थे, 4 हिंदू मैन हु वर नाउ टेकिंग डिस्चार्ज। ये 2013 में जो अरेस्टेड मैन थे, उनके अगेंस्ट ये प्रोब चल रही थी, और वो भी अब क्या हो गए, डिस्चार्ज हो गए। सॉरी, इस पर्टिकुलर उसमें केस में, 2008 केस में 31 पीपल डाइड। लोकल जो रिपोर्ट्स है वो 37 की है, ध्यान रखना ये बात। नाउ वी कैन से कि देयर इज नो पर्टिकुलर इंडिविजुअल हु इज accused or who is being charged under these 31 or 37 death. यस, सो एक ऐसा केस भी आया जिसमें आपके पास एक अच्छा खासा वो था, बट वो नहीं मिला। देन अब थोड़ा सा इंसिडेंट की बात कर लेते हैं। ऑन द 8th ऑफ सितंबर 2006, क्या था ये पर्टिकुलर इवेंट, है ना? सॉरी, मैंने 2 बार सितंबर लिख दिया। 8th of September 2006, during a holy day of Shab Barat, right? Serial explosion occurred in the Muslim cemetery adjacent to the Hamidiya Masjid in the Mushtabarat Chowk in the Malegaon. There were 31 people क्या कहना चाहिए, who died, 37 claimed, and over 300 injured. ठीक है, सो ऐसा नहीं था कि छोटा मोटा ब्लास्ट था या छोटी मोटी इंसिडेंट थी। 31 पीपल डाइड इन द सीरीज ऑफ इंसिडेंट, राइट? 300 others, एंड दे वर ऑल मुस्लिम पिलग्रिम्स, जो वहां पे क्या कर रहे थे, प्रेयर्स अपनी वो कर रहे थे। एक तो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस वर एक्चुअली अटैच्ड टू द बाइसिकल्स। Yes, the NIA mentioned this. The explosive device were reportedly attached to the bicycles, और वो bicycles वहां पे खड़ी की गई, and later on it was a blast, और वहां पे कितने लोग मर गए? 31। रिपोर्ट्स 37 कह रही, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिपोर्ट्स वेरी कर रही हैं। 300 प्लस गॉट इंजर्ड, राइट? केस जो है मल्टीपल मार्किंग के बाद अल्टीमेटली जो है सब के सब, whether that was 9 Muslim men or the 4 Hindu men, whether that is the right wing extremism, Hindu extremism और Islamic extremism, इन दोनों केसेस में किसी के अगेंस्ट कोई भी एविडेंसेस नहीं है। So technically NIA failed to investigate it properly, and there were no person who held it responsible for these deaths and injuries. Comparison to the 2008 मालेगांव blast, है ना? ये थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखने वाली बात है कि दिस इज डिफरेंट। 2008 मालेगांव ब्लास्ट, इस ब्लास्ट में 6 लोगों की डेथ हुई थी, एंड सम 30 प्लस वर इंजर्ड। This is the same particular case in which Sadhvi Pragya was accused, prime accused, with Colonel Purohit, क्या नाम था उनका, प्रसाद पुरोहित, राइट? लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित। दीज वर टू मेजर नेम्स जो इसमें थे। बाद में ये भी क्या हो गए थे, एविडेंसेस, लैक ऑफ एविडेंसेस की उसमें कॉन्स्पिरेसी चार्जेस जो है इनके प्रूफ नहीं हुए थे, तो दे वर आल्सो रिलीज्ड। सो देयर वर टू मालेगांव ब्लास्ट, राइट? मालेगांव आज से काफी समय पहले से एक्सट्रीमिज्म का एक हब रहा है, और ये दोनों के दोनों जो है वहां पे देखने को मिले थे। ठीक है, एंड 2025 में इसका जजमेंट आया था, लास्ट ईयर 2025 में, है ना? सो ये चीज ध्यान रखना है कि जुलाई 2025 में, ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस और इनसफिशिएंट एविडेंस, कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और
लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को क्या कर दिया था, बरी कर दिया था, डिस्चार्ज कर दिया था। गेटिंग, मेक श्योर करना कि ये केस थोड़ा सा फॉलो करना, क्योंकि दिस इज अ यूनिक काइंड ऑफ इंसिडेंट कि जहां पे कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है इतनी सारी डेथ का। चलो, वन ऑफ द रेगुलर न्यूज जो चल रही है वो है यूएस ईरान। मैं बंगाल इलेक्शन के बारे में बात करना चाहता था। आई वांटेड टू टॉक अबाउट बंगाल इलेक्शन, बट द प्रॉब्लम इज देयर आर टू थ्री डिफरेंट सेट ऑफ न्यूज जो है दैट यू कैन फाइंड इन द मीडिया. Typical mainstream media, they didn't talk about the real issues. They are just talking about Jhalmuri. Yes, the Jhalmuri video got 121 million views. Last yesterday I saw. So, मतलब technically 12 करोड़ लोग ये देख रहे हैं कि मोदी जी झालमुड़ी खा रहे हैं. So mainstream media is not talking about the real issues. There are YouTubers जो journalism करते हैं. They are talking to the people. They are talking to their what we can say issues and whom they are going to vote. एंड उन सब में वेरिएबल रिपोर्ट्स आ रही हैं टॉकिंग अबाउट द एक्सपर्ट्स जिन्होंने बंगाल पॉलिटिक्स को क्लोजली फॉलो किया है एंड अदर पर्टिकुलर थिंग. तो दे आर स्ट्रिक्टली सेइंग टू थ्री मेजर पर्टिकुलर पार्ट दैट थोड़ा सा कवर कर ही लेते हैं वेस्ट बंगाल इलेक्शन में क्या हो रहा है. क्वेश्चन नंबर वन, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट. Why this is important because of two reasons, right? Number one, last 2021 election was happened during the COVID, right? And at that time, Bharatiya Janata Party, who never made a kind of significant impact in the Bengal politics, right? They did make a significant impact, though they didn't reach to the 300 mark. And there was several seats, I guess 36 seats were there, where the victory margin was just 5,000. So BJP was having a particular hope that they can win this particular election. Second thing, 2021 से 2026 में there are several changes. For example, 2021 was the year of election in which the a lot of Trinamool Congress leaders, MLAs, MPs, they left the party and they joined the BJP. This year, we cannot see a single person who left the Trinamool Congress and joined the BJP. And there are allegations on Bharatiya Janata Party that they are fighting election alongside with the election commission. Yes, there are 265 battalions. So technically, every 100 citizen of West Bengal is having one armed forces of CAPF, right? There are police deployment. There are notices कि आप बाइक में दो लोग नहीं जा सकते 6 बजे के पहले 6 बजे के बाद नहीं जा सकते. There are different kind of administrative loophole that is being used. These are the acquisition, right? So this year, 2026 is something which is actually going to check whether the election commission is working fairly or not. So ये experts का कहना है कि this year, this particular election is very important. Before this, Bihar election happened. If Bihar, UP, and West Bengal are under control of any particular party, the chances to make the government at the central, right, center, becomes higher and higher. The Bharatiya Janata Party narrative against the Trinamool Congress for the anti-women sentiment and all other thing, right? तो ये सारी चीजें भी उन्होंने women reservation bill plus delimitation के साथ करने की कोशिश की. Then Modi ji came to address to the nation. So experts are saying कि in this particular year, the BJP, Bharatiya Janata Party election machinery is working really hard to give a strong challenge, right? There are 15 state CMs which are there. There are like, I guess, 31 cabinet ministers which are there. Modi ji is there. Amit Shah is there from last 3 months, right? A lot of thing is going on. Whether ED and EDC associated जो raids है, whether that is IPAC, right, or other TMC leaders, they all are going on. And this year the election is very chaotic. एंड उसके ऊपर जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस बंगाल इलेक्शन का के लिए दैट वाज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. The way special intensive revision happened, the way appellate tribunal has been created, the way people didn't get the right to the vote, the way things are happening in a different manner, right? A lot of things with the Election Commission of India is being questionable.
सो इस पर्टिकुलर इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस काफी व्हाट वी कैन से इम्पोर्टेंटली वो होने वाली है, कि कहना चाहिए चैलेंज होने वाली है। सो प्रॉब्लम ये भी है कि अगर एसआईआर वाज फेयर एंड उसके बाद इलेक्शंस में कुछ गड़बड़ियां निकलती हैं, या आफ्टर दिस इलेक्शन कुछ ऐसा इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें कुछ गड़बड़ी निकलती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिया जो है उसकी इंडिपेंडेंस भी क्वेश्चनेबल हो जाएगी, राइट। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बायस नेचर कई जगह पे देखने को मिला है, दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन एज वेल। फॉर एग्जांपल, there was this one tweet in which election commission of India strictly mentioned Trinamool Congress, saying that this year the election is going to be peaceful and fair, right? So you are telling कि भैया इलेक्शन कमीशन मतलब टीएमसी के कारण वो इलेक्शन जो है फेयर नहीं हो रहा था, राइट। अ लॉट ऑफ थिंग इज गोइंग ऑन बंगाल इलेक्शन में। uh, कल एक एक्सपर्ट ये है कि मतलब he is a political commentator in the Twitter. He said कि this is a same match, है ना, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एक टेस्ट मैच हुआ था, in which PVS Lakshman, Rahul Dravid, they played a great innings, right? They were very good. Then there was Australia जो high particular क्या कहना चाहिए बॉल विलीज, बाउंसर्स और सारी चीजों के साथ काम करे थे, साथ में स्टीव बकनर भी उनके साथ। सो मैच कहीं ड्रॉ ना हो जाए और समथिंग लाइक दिस। सो आई नो तुम्हें बिल्कुल याद नहीं होगा वो मैच के बारे में, बट दिस मैच वाज वेरी इंपॉर्टेंट और शायद ईडन गार्डन में ही खेला गया था, तो यस ये चीजें चल रही हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू चाचा ट्रम्प, राइट। यूएस एंड ईरान का जो वॉर है उसकी बात करें, तो yesterday we talk about the indefinite ceasefire, right, which was there, ठीक है। और ये एक्सटेंशन किया गया है बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप, इट वाज द रिक्वेस्ट फ्रॉम पाकिस्तानी ऑफिशियल्स कि हमें थोड़ा सा इंडेफिनिट एक्सटेंशन दीजिए सीज फायर में, सो दैट वी कैन पुट ऑल थिंग्स टुगेदर एंड वी कैन गेट ईरानियन ऑन द टेबल फॉर द टॉक। तो उन्होंने ये बात किसके लिए बोली थी? पाकिस्तान के लिए, उनके कहने पे हुआ था। द नेगोशिएशन इज गोइंग ऑन। एक राइटर्स जो है उन्होंने वो किया है कि a second round of talk is anticipated in Islamabad within 36 to 72 hours. The White House offers a flexible timeline, राइट। सो जो वहां पे लोकल रिपोर्टर्स है, राइटर्स की, इवन अल जजीरा का ये मानना है कि अगले एक दो दिन में दे कैन एक्चुअली मूव फॉरवर्ड इन द सेकेंड राउंड, क्योंकि दोनों को इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। अमेरिकन्स आर फेसिंग द मिड टर्म इलेक्शन, हायर गैस प्राइस, there is a dissatisfaction against Israel in the America. So Americans are also being pressurized. ईरानियन जो हैं देवर फॉर्मली पहले से ही वॉर के अगेंस्ट थे, तो देर आर चांसेस कि देर शुड बी लीनियंसी इन द टर्म्स एंड कंडीशन, and US Iran may sit together to discuss the terms of permanent peace within next 1 to 2 days. So ये सीधे तौर पे रिपोर्ट्स जो है वो आपको देखने को मिल रही है। कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए हैं इस दौरान। सो जो मिलिट्री और वी कैन नाउ से मैरीटाइम अपडेट्स, हाँ अब वो लड़ाई वहां पे नहीं चल रही, दो इसराइल स्टिल अटैकिंग ऑन दी लेबनान, राइट। हाँ उसके उनके बीच में सीज फायर हुआ, इसराइल हैज नथिंग, मतलब भाई उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, सुबह सुबह उठ के चार बॉम्ब दाग दे फिर उसको याद आता, नो नो देयर इज अ सीज फायर गोइंग ऑन। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। सो मैरीटाइम अपडेट्स की बात करें तो जो आईआरजीसी है ईरान की, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, जो मेन मिलिट्री पावर है, दे सीज्ड टू कंटेनर शिप, राइट, एंड फायर्ड ऑन वन, मतलब थर्ड, फायर्ड ऑन थर्ड कंटेनर शिप। क्यों कर रहे हैं ये? दिस इज द एक्चुअली व्हाट वी कैन से एक्शन रिएक्शन सेटअप, क्योंकि अमेरिकन भी ये काम कर रहे हैं। अमेरिकन आर एक्चुअली इंटरसेप्टिंग Iranian oil tankers or any particular tanker that is coming from the Iranian port, and they are seizing it. So technically it's an international violation of international law. It's a piracy. So Iranian were like कि हम भी यही करेंगे। Yesterday also, the US CENTCOM has like mentioned this. The US intercepted the three Iranian oil tanker in the Asian water, while CENTCOM denied report of successfully invasion of any particular blockade. So जो ट्रैकर डेटा है वो कहता है कि रेगुलरली जो शिप्स हैं दे आर मूविंग,
अमेरिकन सिटकॉम कह रही है कि भैया देयर इज नो इन्वेजन इन द ब्लॉकेट, चल रहा है। ठीक है। लेबनान के लिए मैंने बता दिया था कि देयर वर लाइक कंटिन्यू स्ट्राइक ऑन द लेबनान, एंड जो 1 मंथ सीज फायर एक्सटेंशन रिक्वेस्ट है बेरूत का, उसको उन्होंने क्या किया है, मजाक उड़ा दिया है। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिमेन क्लोज विद ईरान लिंकिंग द रीओपनिंग टू द रिमूवल ऑफ यूएस ब्लॉकेड। एंड जो एक एग्जीक्यूशन हुआ है ईरान में, राइट, वो पर्टिकुलर थोड़ा सा क्रैकडाउन या थोड़ा सा चीजों को क्रिटिकल बना रहा है। द थिंग इज कि अमेरिकन मीडिया एंड स्पेशली ट्रम्प mentioned this that the protester who was protesting against the Iranian regime has been hanged to death, राइट, फॉर प्रोटेस्ट। जबकि ईरान की तरफ से सीधे तौर पे ये न्यूज है, द एग्जीक्यूशन ऑफ अ फॉर्मर न्यूक्लियर एम्प्लॉय फॉर एस्पियोनॉज highlights an increase in as described by the rights to crack down on the dissent। तो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम एम्प्लॉय है, हमने उसको वो किया है ऑन द चार्जेस ऑफ एस्पियोनॉज, दैट्स व्हाट ईरान इज सीइंग। अमेरिकन आर सीइंग कि नहीं, वो प्रोटेस्टर था जिसने प्रोटेस्ट में पार्ट लिया था और आपने उसको एग्जीक्यूट किया है। आईआरजीसी की पावर बहुत इंक्रीज हो गई है, क्या वहाँ आईआरजीसी मिलिट्री रूल कर सकता है क्या? पाकिस्तान जैसा हो सकता है? रुद्र, टेक्निकली द मेन पावर बिलोंग टू आईआरजीसी in Iran. The supreme leader and its cabinet and parliament things are having administrative control. IRGC is that particular क्या कहना चाहिए इंस्टीट्यूशन जिसने 1979 के बाद से इसराइल एंड अदर कंट्रीज के अटैक के अगेंस्ट ईरान को सक्सेसफुली ऐसी कंडीशन में रखा है कि कोई इन्वेजन है किसी टाइप का डोमिनेंस नहीं आया बाहर से। तो यस, IRGC is one of the most respectful institution in Iran, and they have a power because the people are with them. So, but ऐसा कहना कि नहीं पाकिस्तान जैसा दे आर गोइंग टू dethrone द एग्जिस्टिंग कमांडर्स या जो भी सुप्रीम लीडर्स एंड कैबिनेट है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता बिकॉज दे हैव प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। Remember yesterday we talked about this that the Abbas Arakshi is missing from the Twitter or something like this, right? So I got the news from Al Jazeera. I got an update that he was not well. So he was the one जो कि कहीं ना कहीं अपने को वो कर रहे थे और आईआईजीसी की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे थे, बट कल उनकी तरफ से ट्वीट आना वापस शुरू हो गए। The Americans were actually exploiting this particular situation as the differences between the administration and the IRGC, but ऐसा कुछ नहीं है। विक्रम की कौन सी मूवी आ रही है? आई डोंट नो यार, मैंने लास्ट जो देखी थी ना, दैट वाज वो पेन्निन सेल्वन देखी थी। सो ध्रुव नक्षत्रिम इज अ स्पाई थ्रिलर डायरेक्टेड बाय गौतम वासुदेव मेनन। हाँ, सो ऐसी एक मूवी आ रही है जो रिलीज होगी कल, फ्राइडे को। तो पढ़ाई कर ले यार रोशनी, यार बाद में देख लेंगे मूवी वूवी। ठीक है। चलो, yesterday we talked about the what we can say conditions that is being arising due to this particular war। तो उस पे भी अपन ने बात की थी। तो एनर्जी मार्केट की बात करें तो ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो 100 प्लस ही चल रहा है एट ऑल द टाइम, डॉलर पर बैरल, राइट। एंड जो नेवी के वो हैं सेक्रेटरी हैं जॉन फैलन, ये डिपार्ट कर दिए गए इमीडिएटली फॉलोइंग द अदर सीनियर मिलिट्री चेंजेस। अमेरिका में, यूएस में there are some military changes and problem तो हो ही रही है। India Pakistan expressed support to the ceasefire extension hoping to lasting a resolution, और वो होना भी चाहिए। राइट, सो दिस वाज द अपडेट। अब थोड़ा सा उधर से चले जाते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। सो सीन ये है कि if the writers in Al Jazeera are quoting correctly, right, even the Telegraph, the local level, and when the New York Times, they are saying कि 1 to 2 days में they are supposed to get back to the second round of the, and at this particular time, Americans are going to have certain leniency on the terms and condition. The major problem with one particular term, that is nuclear enrichment. Right. The Americans wanted it first to 20 years that no nuclear investment. The reports come that Iran was ready for 5 year and no nuclear investment.
But now the Iranian are saying ki we have a right for the to the peaceful enrichment of uranium, so we are not going to do this. So the main discussion is on nukes. Yes, ईरान ने हर बार एक्सप्रेस किया है कि वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड न्यूक्लियर वेपन बनाने में हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है. बट द इजराइलीज आर नॉट एट ऑल कन्विंस्ड एंड इफ इजराइलीज आर नॉट कन्विंस्ड दैट मीन्स कि अमेरिकन्स आर आल्सो नॉट. यस, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि दे केम विद अ कॉमन टेबल एंड देन उसके बाद डिस्कशन हो सके. सो दिस वाज द मेजर अपडेट. इलेक्शन एंड अदर पर्टिकुलर चीजों को मिला लिया जाए तो थोड़ा सा पेपर रिवाइज कर लेते हैं. राइट. Okay. So, tributes mark a year of Pahalgam attack. एक साल पहले आज के दिन पहलगाम में अटैक हुआ था. We lost 22 people. Right? Some coward crossed the border, attacked on civilians when they were enjoying their life. And फिर उसके बाद हमारी मिलिट्री एंड आर्मी ने जो धूम मचाई है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे. राइट. पाकिस्तान was at the verge कि उसको ये बोलना पड़ा कि हम न्यूक्लियर बम चला देंगे. राइट. देन कम चाचा ट्रम्प जिसके बाद से वो रुक ही नहीं रहा. डोनाल्ड ट्रम्प को तुमने नोटिस नहीं किया है ना. यस. डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुप रहने ही नहीं सीखा. वो भाई चुप ही नहीं हो रहा, वो कंटिन्यू बोले ही जा रहा है. इसराइल इज घर की बुआ जी. नहीं यार, इसराइल इज नॉट एट ऑल घर की बुआ जी. देर आर सम बुआज हु आर रियली कूल लाइक माइन. है ना. इसराइल इज नॉट एट ऑल वेलकमिंग, मतलब वो पीस के लिए वेलकमिंग है ही नहीं. The society is different. कल मैं कुछ चीजें पढ़ रहा था. I was reading a book, The Survey of World History. उसमें इसराइल के बारे में कुछ इवेंट पढ़ रहा था ना. रियलाइज कि इनके सोशल कल्चर में ही इस टाइप की चीजें हैं कि जूस की उसमें जहाँ पे वो खुद को सबसे सुपीरियर समझते हैं. When somebody is having superiority complex ना, they are not welcome. So पहलगाम अटैक के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था. पाकिस्तान को ये तक बोलना पड़ा कि भाई रुक जाओ नहीं तो हम न्यूक्लियर बम चला देंगे. देन कम चाचा ट्रम्प एंड ही वाज लाइक आई डिड द सीज फायर. उसके बाद से वो चुप नहीं हो रहा है. ना तो उसको नोबेल पीस प्राइज मिला. उसने मादुरो को उठा लिया. क्यूबा को परेशान कर रखा है. नेटो को परेशान कर रखा है. ग्रीनलैंड को परेशान कर रखा है. डेनमार्क को परेशान कर रखा है. उसके घर में कुछ फाइल रिलीज हो रही है एप्स्टीन फाइल के नाम से. उसने दुनिया को परेशान कर रखा है. उसने उनकी ईरान पे अटैक कर दिया. दुनिया में तेल और गैस नहीं मिल रहा है. इकोनॉमीज आर डाउन. The inflation is rising, the fuel price is rising, but ये चुप नहीं हो रहा है. राइट. यस, मीन काउंट में भी लिखा है, मैंने पढ़ा था. खैर वी विल डिस्कस अबाउट इट कभी और. अभी वो उस पे नहीं रहते, भी करंट अफेयर्स पे रहते हैं. सो यस, दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग. शटडाउन हिट्स मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मणिपुर. आई होप इलेक्शन खत्म होने के बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मणिपुर पे ध्यान देगा. राइट. बिकॉज इट्स बीन 3 years. अगर 3 साल से शरीर का कोई पार्ट दुख रहा हो, if we consider India as a body, and there is a part that is being under pain from last 3 years, and you are not seeing anything to the to doctor, or you are not doing anything, then it's a problem. Right. Yeah. So let's discuss the newspaper. Let's revise it. All four accused of Malegaon 2006 blast is being discharged. Iran seized two ships hours after a Trump extended the truce. Voting for all 234 Tamil Nadu seats in and phase one in Bengal to be happen today. मुझे इस बार बंगाल इलेक्शन बहुत उससे देखना है. I want it कि ऐसा हो. Mamta ED dispute not a center state issue. Remember that time when ED was raiding IPAC office? Mamta Banerjee reached over there. That she took her data, the laptop, and everything, and then उसके पास ये इशू चल रहा है. राइट. इलेक्शन. अच्छा, ये आयरनी है ना. मतलब इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा. तुमको चाहे तो तुम हंस सकते हो, मैं नहीं हंसूंगा. इलेक्शन कमीशन नोटिस टू द कांग्रेस चीफ फॉर रिमार्क अगेंस्ट द पीएम. यस. सो मोदी जी के अगेंस्ट रिमार्क करने पे, राइट, जो वो है कांग्रेस चीफ है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके अगेंस्ट में इलेक्शन कमीशन ने वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए नोटिस भेजा है. बट मोदी जी डिड एंटायर एड्रेस टू नेशन accusing
Congress party and their allied parties, and they are doing nothing. Yes. खैर ये अपन डिस्कस कर चुके हैं. Sorry. Hmm. Okay. So ऐसी डिस्चार्ज नो बैक पेन अभी भी है यार. 2006 मालेगांव ब्लास्ट केस. 4 मई का हॉलीडे करा दो केशव सर से कि क्यों भाई 4 मई को क्या है. 4 मई को आ रहा है क्या रिजल्ट? राइट. आई डोंट मतलब 4 मई को आ रहा है 9th मई को आ रहा है. आई रिमेम्बर 9th मई इज द डेट ना. नहीं 4th मई है. नहीं नहीं करेक्ट करेक्ट है. 4th मई इज द इलेक्शन रिजल्ट डेट. दैट्स करेक्ट. राइट. ओके. सो वो मालेगांव केस अपन ने डिस्कस कर ही लिया था. Right. Candidate moves Supreme Court against the PM address. Yes, former Congress MP from Kerala and a candidate in 2026 Assembly election, TN Prathapan, है ना, on Wednesday moved to Supreme Court against the inexplicable inaction on the part of Election Commission despite of a flagrant violation of Model Code of Conduct by the what we can say political address by the Prime Minister saying this is address to the nation. So by this is something that is supposed to happen. If an institution is not working properly, ना आपको ये चीज करनी चाहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ and you should at least try. मैं इस चीज के लिए एकदम एग्री हूँ. आई एम अप्रिशिएटिंग दिस कैंडिडेट कि जब तक आप पॉलिटिकल लाइफ में अपोजिशन को लाइक एवरी स्टेप में अगर आप ट्राई नहीं करो बीइंग इन अपोजिशन तो आप गलत. राइट. उन्होंने प्रॉपर एक नोटिस बनाया है 123 सेक्शन 7 का सेक्शन 123 7 का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कि क्या चीजें गलत है यहाँ पे. राइट. सो इट्स अ गुड थिंग कि ऐसा कुछ हो रहा है. चले moving on to the next one. We discussed this election commission seized 100,000 sorry 1,000 crore in the Tamil Nadu and West Bengal election. ये जरूर एक अच्छी न्यूज थी. कपिल सिब्बल slams बीजेपी ईसी alleges gross abuse of state machinery. जो कपिल सिब्बल हैं राज्यसभा मेंबर हैं from the Congress party, a very famous Supreme Court lawyer, right? He actually gave a press conference, right? And उसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी बात बोली. बीइंग अ लॉयर जो भी चीजें आपको समझनी चाहिए थी कि हाउ द इलेक्शन मशीनरी कैन बी मिसयूज्ड, हाउ द अदर थिंग्स आर हैपनिंग इन द वेस्ट बंगाल इलेक्शन, आपको इनके इंटरव्यू से काफी कुछ समझ में आएगा. Sir, why there are major leaders are from RSS in BJP? So many CMs have ties too. RSS is an organization for the social work, public service, and they are like their leaders are associated with the BJP. Right. आप RSS के accordingly RSS का BJP से association directly नहीं है, but the leaders are associated with the RSS for the social work. It's a request from my side. कपिल सिब्बल का वो इंटरव्यू जरूर देखना. You can actually get a lot being a lawyer कि क्या क्या चीजें कंसीडर कर सकते थे. Right. Toxic workplace takes life of 8.4 lakh people annually. Yes, he is member of Rajya Sabha. You don't know this? I should know this. So, more than 8 lakh 40,000 people, right, die each year around the globe from a health condition linked to the psychological risk, including the long working hours, job insecurity, workplace harassment, according to the global report by International Labour Organization released in Geneva on Wednesday. It's a huge number. कि एक वर्किंग पॉपुलेशन में 8.4 लाख पीपल आर दोस जिनका जिनकी डेथ हो जाती है फॉर द बैड वर्किंग कंडीशन, whether that is job security, whether that is workplace harassment, long working hours के कारण जो मेडिकल कंडीशन होती है उन सारी चीजों में. So yes, खैर इंडिया में कोई nobody is going to talk about the labor laws and the risk of long working hours, bad
environment and something like this. तो लोड मत लो, जब तुम लॉ स्कूल से पास आउट होगे तो तुम भी मॉर्निंग 10 से रात को 10 बजे तक जॉब करने वाले हो। नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू, दैट इज फॉर श्योर। पर्शियन डेडलॉक अपन बात कर चुके हैं तो कि क्या चल रहा है, तो इस पर्टिकुलर उसमें एडिटोरियल में लिखा गया है कि डोनाल्ड ट्रम्प शुड एक्चुअली लिफ्ट द ब्लॉकेड सो दैट द पीस टॉक कैन हैपन। बट अभी डोनाल्ड ट्रम्प की ईगो पे लगी हुई है। इंडिया पोस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फ्यूचर राइट फ्रॉम द रेड सन टू द न्यू डॉन। इस पे अच्छी बात करी गई है कि भाई क्या क्या चीजें हो सकती हैं, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी आफ्टर द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज बीइंग डेड। राइट, बियॉन्ड ट्रेड डील्स टू बिल्ड अ न्यू आर्किटेक्चर। ये भी एक अच्छा वो है यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारा ट्रेड डील हुआ है उस पे उन्होंने वो की है। कॉमन कंसर्न, इंडिया एंड साउथ कोरिया कैन कोऑर्डिनेट फॉर वेदरिंग जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म। तो वो तो खैर कर सकते हैं बट करेंगे नहीं ना, दिक्कत ये। वॉर पोजेस चैलेंजेस टू द इंडियन इकोनॉमी बाय नंबर ऑफ चैनल्स। ये हमने कल बात की थी किस तरीके से एक सप्लाई चेन डिस्रप्शन जो है दैट इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ इश्यूज इन द इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी। टेक्सटाइल अपीरियल एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड इन द फाइनेंशियल ईयर 2026। होना ही है, काफी कुछ वो हो रहा है। एलपीजी शिप फ्रॉम गल्फ इज आइडल, फॉरेन शिप्स ब्रिंग यूएस कार्गोज। तो मैनी ऑफ 9 इंडियन एलपीजी फ्लैग सॉरी इंडियन फ्लैग्ड एलपीजी कैरियर जो है पर्शियन गल्फ से खाली जो है वो हो रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट की चीजें अच्छी रहें। देन इंटरनेशनल न्यूज में वही है, चाइना डिनाइज यूएस डिटेन शिप इन द वेस्टर्न रीजन कंटेन गिफ्ट फॉर ईरान। राइट, विल नॉट लेट यूएस डिक्टेट ट्रेड टर्म्स says Carney ahead of bilateral talk। ये दिस इज गोइंग टू बी मतलब गुड साइड टू सी। The Canadian Prime Minister Mark Carney said the US is not going to dictate the terms of upcoming trade talks. There are going to be equal level discussion. So America जो है अपने allies धीरे धीरे खो रहा है, right? हाँ, ये this was the news. Nepal ministers actually resigned amid the financial scrutiny. Exit a month-old government. जो सुधन गुरुंग थे, like he was the home minister, right, appointed by the Balin Shah Balin, right, and he allegedly has link with a businessman who was detained for the money laundering, and उसके लिए उन्होंने मोरल ग्राउंड पे क्या कर दिया, होम मिनिस्टर का डेजिग्नेशन छोड़ दिया। These two dudes were actually cool। मतलब एक साइड चाचा रैपर है, दूसरी साइड उसका दोस्त जो है डीजे है। एंड ये कहीं पे भी लाइक सिग्नल विग्नल में खड़े हो जाते थे और वहां पे वो ट्रैफिक निकालने लगते थे, एक रैप करने लगता था, एक म्यूजिक बजाने लगता था। दैट्स जस्ट माय इमेजिनेशन है ना। बट दे वर अ गुड पर्टिकुलर ड्यू। यहाँ पे मोरल ग्राउंड्स पे उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। राइट, उन्होंने सीधे तौर पे बोला कि मतलब अ, एक स्टेटमेंट मैंने ट्विटर में जो देखा था उसकी अगर मैं बात करूं, क्या कहना चाहिए कि अरे हाँ कि द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द मोरल एंड द कुछ ऐसा उन्होंने बोला था, जेंजीज ने काफी कुछ सेक्रीफाइस किया है। सो इफ देर इज समथिंग जो कि गलत है उससे एसोसिएटेड है तो वी शुड एक्चुअली लाइक ऑन द मोरल ग्राउंड में उसको छोड़ने के लिए तैयार। राइट, उन्होंने ये भी बोला था कि फॉर मी एथिक्स इज ग्रेटर देन द पोस्ट, ऐसा कुछ उन्होंने बात बोला था। राइट, और पब्लिक ट्रस्ट बनाए रखने के लिए मैं पोस्ट छोड़ूंगा। सो ही इज गुड, इट वाज गुड। So you are the first educator who speaks facts, Sadik. Sadik, I hope I'm doing great job for your education as well. Right? यूएपीए तो है ही है। खैर, this was something जो एक अच्छा वो था। अच्छा, कल के मैच मैंने नहीं देखे, so I cannot say anything about the match. So this was your newspaper for today. Make sure कि ये दोनों टॉपिक मिस मत करना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बंगाल एसआईआर इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर क्लैट एग्जाम। तो जितना हो सकता है उसको फॉलो करना। राइट, बंगाल इलेक्शन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द व्हाट वी कैन से मेजर चेक फॉर द मतलब मेजर टेस्ट फॉर द बीजेपी। बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा दम लगा के इसमें इस इलेक्शन में वो किया हुआ। इफ दे विन
तब तो फिर चीजें बीजेपी के लिए बहुत पॉजिटिव जाने वाली। इफ दे लूज तब फिर चीजें ऑपोजिशन के लिए बहुत नेगेटिव जाने वाली है। यस, ये दोनों चीजें वो हो रहे हैं। तो खैर ठीक है, यू आर वेलकम टू रीड इट। मेक श्योर करो कि पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लेना। And this is it from my side for today. Yes, थोड़ा अभी 2-3 दिन और you have to manage with the lesser time and lesser topic, क्योंकि मेरा फिजियो चलेगा तब तक। जैसे ही वो ठीक हो जाएगा तो we are going to get like more hours, थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। So this is it from my side for today. I'll see you in the next session. Till then, have a great day ahead. I wish you and all your loved one a good health, good mental health. If you are in Bengal, make sure to vote. अगर आप वोट करते हैं तो 18 के हो गए हो तो, and vote for your issues, not for the party issues. ठीक है? Vote for your issues. Vote for that candidate जो which talk about your issues, right? Which have plan of action कि अगले 5 साल में अगर आता है तो वो क्या कर सकता है। ठीक है? चले, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। सी या गाइस, गुड डे। तमिलनाडु वाले तुम भी ढंग से वोट करना। चलो, सी या।